Hello guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. We're back and जैसा हमने कहा था कि अब ये वाला एपिसोड जो है हम थोड़ा सा इंटीग्रेट करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों भाई, तुम हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत चीजें हो रही, इतनी हो रही कि स्क्रीन कम पड़ गए हैं घर पे। स्क्रीन बर्न पड़ गया है, टाइम कम पड़ गया, इतनी सारी चीजें हो रही है, इतना सारा क्रिकेट हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज कवर करे, कौन सी चीज देखे, कौन सी चीज छोड़ दे, कौन सी चीज मतलब इंपॉर्टेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. But today, what we are going to do is discuss about the domestic cricket that is happening in India, which is Syed Mushtaq Ali. And apart from that, obviously, we are also going to continue our series with Mr. Shriram, जो आरसीबी के साथ आज हमने आरसीबी की टीम कवर करी है. आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. सो प्लीज, अगर आप आरसीबी के बारे में सुनना चाहते हैं तो पहले वो सुन लीजिए. फिर उसके बाद आप सैयद मुश्ताक अली के बारे में सुनना चाहेंगे, आई एम श्योर, तो सैयद मुश्ताक अली के बारे में भी सुन लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं. आज हम कवर करेंगे ग्रुप ए ऑफ सैयद मुश्ताक अली, क्योंकि कई सारे ग्रुप है, ग्रुप ई तक है. तो ग्रुप ए कवर करेंगे क्योंकि इसको भी फेजेस में ही कवर कर सकते हैं, इतनी सारी टीम्स हैं. तो हमने सोचा कि मतलब यार फेयर नहीं होगा कि हम किसी टीम के बारे में आपको ना बताएं और किसी टीम के बारे में हम बता दें. तो इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब हम सारी टीम्स कवर करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस कवर करें. उससे पहले, इससे पहले कि आप ये भी कहें कि नहीं भाई आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी कवर करो, आप साउथ अफ्रीका और श्रीलंका भी कवर करो, तो बांग्लादेश वो वेस्ट भी इंडीज भी करेंगे, कवर पर जितना करना है। हो पाएगा उतना ही करेंगे भाई. ठीक कितना है. क्रिकेट देखेंगे भाई, कितना क्रिकेट देखेंगे। तो ये है. बाकी yes, of course, we've recorded this episode also in phases, and what's going to come next is the recording that we've done with Mr. Sriram. So enjoy, guys, the RCB podcast. All right, as promised, we are back, and this time we are going to dissect the Royal Challengers Bangalore, and this is a team which obviously never ceases to amaze us. You know, one of the most popular teams in the IPL for a lot of reasons, and of course, why not? When you have Virat Kohli in the side, then of course it's bound to be that way, and one of the most loved sides, in fact, in the IPL. So, thank you for first of all, for joining us again today. But before we take up, a few questions on the IP on RCB, there are a few questions that were also mentioned in the comment section last time that we did KKR. So quickly, these three questions I would like you to just run us through. There is Mr. Sanid Yaj who's asked as to how you end up picking up bowlers like Kuldeep and Bumrah and Sunil Narayan and Varun Chakrabarti. How is it that the batsman, copes up with that? No, you mean I don't know what's his question here exactly. Does he mean how they read the technical side of things, or is Yeah, he? maybe pick up the bowler from the hand. Okay. Look, it's so much technical for us to actually discuss that. But if you see any batter, any seasoned cricketer who or any cricketer who's ready to play IPL, they would have had so much game time. They would have come off playing thousands of balls against any of these type of bowlers. So you do get a match practice scenario. You kind of simulate them in the nets. There are so, like I said, in one of the sessions I spoke about this. There are so many throwdown specialists, so many net bowlers who simulate, who imitate the kind of bowlers. We all have seen somebody like Ashwin who bowls in India, who when Australian team comes into this country, they always want to play to get a feel of how Ashwin will bowl, and so forth and so on. So people have that luxury today where they can simulate somebody and then they can imitate somebody and then they get used to the conditions. But if you specifically ask me how you pick up Kuldeep, his especially his back of the hand release, which goes the other way, and Bumrah, look, it itself is a discussion that leads up to multiple sessions of chats and how it can be implemented. But that's what the professionals do. That's what the best of best batters actually watch in preparation to the game.
Right. They do spend a lot of time. I remember in one of the incidents, right, when Shikhar Dhawan, such a great player he is for India, he was. Um, every single session that I spent a time with him there, right? Every single session before getting into every single game, he although he knows Bhuvneshwar Kumar in and out, he still comes, sits, understands what he does before the game, so that it's like revising. You might have prepared so much for your exams, but just before you get into the examination, or sometimes you brush through your books, so it's like that. Just a quick revision helps you brush through your thoughts, as in what he or the opposition is going to do to you, or that particular type of bowler Mm. whom you're thinking is going to do to you. There's a lot of study that the analysts do, but try to concise that and take it to the players. And hey, every third ball will be the googly that he's going to bowl to you as a left arm Chinaman, or probably your off spinners who will come and bowl the carom balls or the arm balls that they bowl, those slingers, swingers. There's so much study that goes behind it. That's what the analysts do before the game, before the tournaments, before any match, that they play. So in all the pre-match meetings, most of these are discussed. Then there's one question which Mr. Saurav Joyal has asked, which he seems to be pretty disappointed with the Australian batting lineup. Where he says that they don't look very interesting. It's like their body language is that they're chilling and smiling, and do they have any plans as to how to counter the Indian bowling lineup? There's nothing wrong about smiling. Forget about the game for a second, and imagine they're all are friends at the end of the day. They all are playing for their countries. Obviously, there's a lot of pressure, expectations Hmm. on going out and winning. If the role reversed and Hmm. Indians were like that, imagine we 140 crore Indians would have felt that, okay, these guys have given up the game, and then they're still laughing. But that's how it should be. I mean, so be it. I mean, you lost a game, it's okay, but the life is not going to end there. Australians are known to bounce back, and they bounce back really hard. In no stretch of imagination, this Australian team is any lesser to what they had in the previous era, or the last few years that we have seen. Um, I personally think there's a lot of things at stake for them, for the Aussies. In this second test, at least the pink ball, where there's a bit of history for India. If you go back, a few years on the timeline, and understand how Indians were all out for a mega score. So you don't want to bring back those memories. But Justin, I think this morning I heard that Josh Hazelwood is not going to be fit for Yeah, this, which injured. will be a blessing in disguise for for the team. Yeah. But you never know. I mean, they have so many bowlers in their ranks, and they keep producing those gems every year after year. So you can never take anyone light Hmm. from the Australian setup. It's raining in Canberra as we speak, and the match has been delayed. So maybe even the toss can happen late in the evening. But that is a match that is going to happen with the pink ball with the Prime Minister's 11. And now it's time to move on to the Royal Challengers Bangalore. So this team obviously nobody gave them a chance when they lost about 6 games in a row. I think they lost the first one, then they won the second one, and then this year, and I'm talking about this year, and then they lost 6 in a row. And there were quite a lot of mentions, from Faf du Plessis as well, who happened to captain RCB this year, that saying that probably they lack that metal as far as bowling lineup is concerned. And I mean, against all odds, and where there were so many permutations and combinations that were also required. Apart from them winning all those 6 games, they ended up qualifying, and it was a great event, obviously, for them to have qualified. And then and today, for the kind of squad that they have today, to what they had this year. How do you feel that RCB, just in general, has done as far as the auction is concerned this year? Look, we will start on a positive note. Certainly, looking at how every team has staked up their squads. RCB pretty has done a pretty good job. Looking at how they brought up some new talent. Very young and
Uh, I would say a very athletic team. This probably would be Virat Kohli's dream season, if I may put it. You have very good mix of youngsters, and most of it are very very athletic. You won't hide anyone in this in this squad itself. If you look at that Right. goes from right from Mohit Rathi to Virat Kohli up top in the entire 22 players that they have taken. Most importantly, again, like we discussed even in the last session as well, every single player whom they have actually trusted on, I'm sure this RCB team has sprung a few surprises in the past. Like you said, losing 6 matches, coming back and showing what they can do. I mean, beating Chennai at home last year would have been the icing on cake for them, and obviously qualifying from there. Any RCB fan, any cricket fan would want to see such rivalry, and those are the moments that we all watch this IPL for, and that's what IPL gives all of us. Uh, Looking at how RCB has done in this auction, given the fact that they have done pretty well last year, letting go of the top four players that I thought are key and core members of this franchise was a bit of a surprise. But definitely, I think they have considered age as a factor, keeping the future on focus on future, understanding what it means to rebuild this side in like to like replacements for a Faf or Will Jacks kind of a role that they see would be ideal. I do not know why they let go of Maxwell at such a low price point. Similarly with Will Jacks as well. But I look like anybody would have these questions why they let go of such a good player. Even Faf for that matter. I mean, I just saw Faf scoring some 60 odd runs in the T10 of some 22 Yeah. balls or something. So I don't think he's aging at all. I mean, look at how he's been scoring game after game everywhere. He's just won a CPL championship. So Yes. uh, again, probably the age is not on his side. I think looking at how RCB wanted to build, they wanted to keep. Look what they got of for in the auction for a Faf. They had a good replacement of a Phil Salt, right? Yes. Who's got a 11.5 crore price point, but if you look at his absolute future for RCB, I think he's going to be there forever, right? So he's probably going to be even after Virat Kohli's era, I'm sure. So probably look at how he will set up this whole thing for them in the next 10 years. They have Devdutt Padikkal, who was unsold initially, and then they picked him later, eventually thinking that again, Bangalore boy, coming from the same state. I think they've put in a lot of trust on him, especially a left-hander at the top. They have Rajat Patidar at number four, who again, in the actual the other auction in the mini auction where he was unsold, they picked him in the accelerated round. I think he came in as a replacement, right? Rajat Patidar, Yes. 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 Yeah. So then again, he came and did what he did. So it's a fabulous team that they have set up, and having look at number six, number five, number six, having a Livingston and Jitesh Sharma, one Indian and one foreigner there. Okay, both of them have great T20 qualities in them. They have shown what it takes to be a T20 batter. At number five, scoring at a brisk 160 plus strike rate, and Jitesh Sharma, I mean, to me is a fantastic buy, right? At 11 crores, their middle order is sorted, right? And then they have what they need. Your superpower of a Tim David, which is a steal for me. Coming in at number seven, having a player like a Tim David, I think at any given point of time in Chinnaswamy, especially like you said yesterday, we spoke about in the last session on whether the venue matters at all. Is there a home advantage at all? So for me, I do not know about how Tim David will fare in most of the spinning conditions, but we have seen that for records. Well, let's put it, in the extreme conditions where the wickets turn, say
is a square turner, right, or low scoring games, the average scores for Tim David has been less than 17, right? That other are talking about his whole career, especially in the IPL. You talk about it's about less than 117 strike rate, right? From whatever I've seen. I'm going by the numbers that I've seen of someone share with me from the back end. So, but quite honestly, keeping away the sprint conditions, right? The slow turners, his strike rate has been phenomenal, more than close to about 180, 190, right? So that is the kind of, I mean, you would never expect in Chinnaswamy the wicket's going to be turning so much, especially in the night games. So I'm assuming that he will be the best fit there, number seven for them. Their batting order can change, the positions can change, but this I think is the core that they wanted. And then you get a Kunal Pandya, then your three bowlers, Rashik Dar, Rashik Salam, and then you have a Bhuvi. We'll talk about Bhuvi, very interesting. I think, in one of the sessions last time, I think we spoke about Bhuvi going to KKR and how the transformation could have changed for them. But here they have nailed this. RCB has nailed this, for them, because that's been their weak link, the bowling, right? How many bowlers year after year we have seen, in so many years that I have seen RCB's big failure, or probably they have not got those X factor bowlers who would come and pick wickets in the power play or in the middle overs. They've tried Mitchell Stark, they've tried Lockie Ferguson. You talk about the who's who of cricket in the bowling, and they've all had all of those bowlers, but still they couldn't do what they expected eventually, right? So I feel strongly that this bowling team is far superior to what all these years that RCB has seen. Right. That goes with Bhuvaneshwar Kumar, and then your Yash Dayal was retained. They've paid, trusted him a lot, and then they've kept him back. They've retained him, and then there is Josh Hazelwood, who again we know is a fabulous new ball bowler, and he's a wicket taking bowler. He strikes at about 12, 13 in the power play. Um, is the internet stable? Yes, sir, it is. Yes, sir. And then they've had Romario Shepherd, Nuwan Tushara as a backup. And then they have got again a very, very deceiving fast bowler in Lungi Angidi, who's very good. I mean, a lot of people actually, go past Lungi Angidi when it comes to T20 cricket. For me, I think, he's one hardworking bowler that I have seen very closely for a number of years, right? And he sticks to his plan. He knows what has to be done. He knows his death options. He knows what he has to bowl when the batsmen are, going against these fast bowlers at any given phase of the game. So for me, Lungi Ngidi is a very, very steal actually when it comes to picking him in the auction for a crore price point. At the same time, he's a very value buy, right? Because for someone like Josh Hazelwood, if he's not there, looking at how you want to keep Lungi Ngidi as a like-to-like replacement in a wicket like Lucknow or in Chennai, I think they've got their game plan right. Hmm. And So I think RCB, what they've done really well this time is, if you watch their matches, their bowling, especially their middle over phase, used to go for a lot of runs, and the death overs used to go for a lot of runs. They used to start all right. Do you think that could be a very big reason of having three left-handed, left-arm spinners who are all rounders, like Jacob Bethel, Runal Pandya, and Swapnil Singh? So do you think RCB has a lot of bowling options now when they go for the playing 11, enabling them to sort of have that, uh, you know, advantage? I'll take this question, Dwanel, but just on, I mean, from where we left, I think. Talking about the spinners of RCB, see, I know Krunal Pandya, Swapnil Singh, obviously Jacob Bethel is a current sensation for the England team, and he's in the news for all good reasons. Uh, Look, I think keeping the overseas option aside,
looking at how Swapnil Singh was used. I mean, Swapnil Singh plays a lot of cricket in Chennai. If you do not know Yes. that, right? He plays in the Chennai league, and people like their scouts have actually done a pretty good job in identifying who that one X factor bowler that they could have in the power play. Swapnil Singh is that one player who could also bat a bit. If you see last year or last few years, they had Shabazz Ahmed, who was Yeah. doing that work for them, right? That particular role. Having Kunal Pandya as a seasoned cricketer who can actually tonk the ball, he can hit the long ball, he can come and bowl in the power play as well. He's done very well for LSG and in Mumbai Indians in the past. And like I said, he is one person who is very smart. He knows what, when, and he's a good fielder also. He's not a liability in any department for that matter. So for RCB to have bought Kunal Pandya at that price point, I'm sure people were chasing him and try to secure an all-rounder in that spot of position 8, especially an Indian. I think they've got their auction plans right here. Swapnil Singh to me is not a starter. He will be a backup unless they want to use him as an impact player in Mm. slow low wickets. Probably again talking about how the wickets will behave in the summer in India, second half of the summer in India, where they will play in Delhi, they'll play in Chennai, Lucknow. So most of it, if I see right, I think in all the touring games where the wicket's going to be a little slow and low, I think someone like a Swapnil Singh alongside with Kunal Pandya will be detrimental to the opposition. And the right matchups that they talk about always, Swapnil Singh has been effective against the left-handers as well as how he does it against the right-handers. So for me, Swapnil Singh again comes to bowl in the power play, kind of a bowler he is, and Kunal Pandya, just after the power play, he'll try to keep the pack tight. So definitely they've got their bowling attack right. Jacob Bethel, if he plays, he would have to play in place of I think Tim David. Yeah. Otherwise, I don't see him play at all. Yeah. Yeah, or And even or even Livingston for that matter, right? Tim David or Livingston, because at the top, Phil Salt has to be playing. I don't think there's another keeper, yeah. so to replace at the top. So And Chinnaswamy being a smaller ground and RCB mostly playing a good set of matches there. Do you think Rasidar Salam is going to have a new and fresh challenge, which obviously is a very good death bowler, but when you're a Chinnaswamy, it sort of does get tougher. I think it's not Rashid Salam. It could be for any bowler. I mean, it's a nightmare to bowl in Chinnaswamy because they will look. That's how it is. When you go to New Zealand, you play smaller grounds than Chinnaswamy, and it is only evident that your skill has to show up there ahead of all your whatever you have achieved in your career. It can go for a toss if you on that given day do not know how to handle and you might have that skill, but you still have to go and be spot on with your execution. Otherwise, it can all go for a Yeah. toss. So for me, Rashid Salam is again proven his worth the last year in the IPL for Delhi Capitals. He came back and I also what we know of his batting abilities. It can come Yeah. in Yeah. handy for the RCB as well. Coming in at number 9, probably couple of sixes if they were setting up a total. I think it'll help them definitely. Yes, death options. He should be a confident bowler. From what he has done in the last year's IPL, and he's got know-how of some of the new players. I think personally speaking, he will be as good as any other bowlers whom they have in their armory. But he will be slightly, have to rework on his plans because he tends to go foolish because of his swinging abilities both sides, and then he also Yeah. gets a bit of reverse from what I've seen. So he might have to sort of drag his length back and use his change ups in Chinnaswamy if he has to be better than most of the other bowlers which you know who have done well in the past, if you sort of compare that. So what I wanted to ask is
that people have been saying that RCB has been pretty smart this time around, not really going for the big buys and the big names in the auction, and you know resorting to what looks like at this point in time a very very smart buy. But I was really impressed with the uncapped names, or the uncapped Indians that they've actually picked up in the form of Abhinandan Singh as a fast bowling option. And you also had Swastik Chikara, who actually happened to score at a brisk strike rate, and also was the highest run getter in the UP league as well. So both these names from the UP league. And apart from that, Manoj Bhandage, who's done pretty well in the Maharaja Trophy as well. We saw a bit of that. How good are these options now? And considering that somebody like Manoj Bhandage can also be playing somewhere around, let's say, as a backup for Devdutt Padikkal, or probably finishing games lower down the order. That's where I said, the RCB scouts have done pretty good job. That even goes to say, Dinesh Karthik's eye for talent and the kind of homework that he would have put into sort of rope in these players. I mean, we all know how good Dinesh Karthik is in spotting talents, and I've seen him for many years. Even when he played in the TNPL, he was instrumental in bringing in a lot of new players, for his franchise when he played Thoothukudi team. Uh, Going, by what I know of them, I'm telling you that they would have done tremendous homework, Dinesh and his team, to put up something like this. And they've got four very, very, very good value buys in Swastik Chikara, Manoj Bandage, Abhinandan Singh, and Mohit Rathi. Mohit Rathi, is a fantastic, leg spinner, who, if we think one of the Indian bowlers are not doing well, the spinners, I think he is a straight leg to leg replacement, and he's ready to play the IPL. And he's no not for me, he's not a backup kind of a bowler. He's ready to play at any given instance, right? Is a value buy again, and the 30 lakh base price they have taken. I mean, four good players coming at 30 lakh base price. Not many of them would have felt that, okay, they all will be ready to play the IPL. For me, these are ready to play guys, and then they will be, of course, time will prove whether they are good enough at the highest level or not. But Abhinandan, looking at how he bowled in the T20 league, in the domestic T20 leagues, especially like those to the left-handers, when he swung the ball so much late, and then he I think he's got the highest highest percentage of wickets striking hitting the stumps in that league. From that is another stat that I saw. So I think that is something that we I mean scouts will be looking at, how. So there are a lot of metrics that as scouts we keep looking at how you rate a player, what it takes for you to actually assess a player and his abilities and qualities. So one such will be to see what the bowler is thinking in different conditions, different situations and circumstances of the game. So I think Abhinandan is definitely a future. If not already, he's ready to play the IPL in my opinion, but I do not know in this 11 or 12 how he will come in. But he's definitely going to be a future for them. For he's an asset. Hmm. But looking at the Chinnaswamy ground, sir, I mean, they've always, as you mentioned while answering our first question as well. What do you think, should be the bowler's strategy to somehow, because we've seen that very very high scoring games and a lot of high scoring this thing chases also in Chinnaswamy, because of the dimensions of the ground. Obviously, the ground is very small, and the chase also becomes very easy. No score there is going to be too big. But one of the reasons why RCB hasn't been able to sort of cross the line every time is just because of the bowlers conceding a lot more.
right? And this time around, of course, with Bhuvi, even when we actually look at Bhuvi's performance in the UP T20 League, he's not been the most economical as well, and hasn't been even a pick, and hasn't been even amongst the wickets, as far as the number of wickets. I think he's only taken about 8 wickets in the 7 games that he played. But one thing, of course, you cannot write him off for sure. That's not what I'm doing. But what they've not gone on recent form. That's one thing that they've done. In the sense. I kind of understand where you're coming from, right? Yeah. Let's put it this way. You can never replace an experience to the fresh talent, the young talent, the future prospect, right? Experience Right. is what it matters for you in this IPL, and there's no question on what Bhuvaneshwar Kumar will do in this pitch, right? To answer your first part of the question, what is that trick that actually gets a bowler to keep the opposition down, or to sort of pull back the game, where most of the runs have been leaked towards the death. We have gone on to see 5 overs hundreds have been scored towards the death of the death overs, right, in the last 4 5 overs in Chinnaswamy. To me, if you see very closely the stats from last year's IPL, RCB have done a phenomenal job in Bangalore in Chinnaswamy Stadium, right? I'm talking about the average. I'm not talking about one single game, right? If you take the average, the bowlers have done a fantastic job. What I mean by that is, if you look at the stats, kind of areas that they bowled, I look at it very closely. The kind of areas that they have bowled, the kind of deliveries that people have started using, whether it's back of the hand slower, wideish yorkers, wide back of length slow deliveries, hitting the stumps from the 6 7 meter mark that they usually bowl in the test match. uh, I think these are the 3 4 kind of deliveries that people have gotten away with, and they've gotten better off the opposition when they bowled in those line and lengths and the areas that we talk about. All the bowling coaches, all the analysts, I'm sure will be working very closely with their bowlers during the pre-camp and then during the season itself, in explaining what the opposition will be coming to you to do in Chinnaswamy. So, what are your getaway deliveries? See, if your preparation is good enough, okay, you don't need to worry about what you're going to do on the particular day. But the interesting part about this game is everything changes so dynamically, right? Every minute, every ball is different. Now, the situation of the game, the smallest of errors, the margin of error is so small that you got to be absolutely on the money all the time. There's no room for error for you in Chinnaswamy, as opposed to what you could do offered in a Lucknow or a Jaipur stadium, right? So because the square boundaries are bigger, you can get away with a back of length slow deliveries where the batsman tries to pull you and then probably miss hits or mistimes it, and then it doesn't go to a boundary because you still have two on the cover for you on the leg side, and then have probably, if you mistime it in Chinnaswamy, even if you mistime it, it can go up, and then it can eventually become a 65-meter six for you, right? I mean, that's how the ground is. You can't help it. You can't pull your boundaries back. So you have to understand, as a bowler, there's only so much that you can do. Sometimes I've had in the dugouts, coaches say it's okay if you get concede 14 runs, it's fine. If you concede 16 runs, it's fine. I don't want anything beyond that, because you settle your mind for something that you know that it's not going to happen. So you stretch your boundaries a little bit more as a coach and say, hey, okay, no problem. You've got the skills. Sometimes these unexpected things do happen. So be prepared for the worst, right? So what I'm trying to say is, you might have prepared absolutely everything that's possible under the sun, but on that particular day, it could have just been a different scenario altogether, which you did not expect, or you would probably think that, okay, it will not go against you. So you can't write off players like Bhuvaneshwar Kumar's kind of experience. And similarly, if you look at, I've got another information which I actually was looking at some time back. Josh Hazelwood has gone for almost 10 runs and over in the death.
right? Right. That's about 9.92 something from what I understand. Yash Dayal has gone for about 10.5 in the day. Although he can bowl wide yorkers, he can bowl straight yorkers. If the batsman is moving outside the off stump to try and flick him on the leg side, he has tried to take his wideish yorkers towards the edge of that wide line, and he has done that pretty well. He has done 17 or 18 Yorkers from what I have seen, those little pitch maps that I've had in the death overs, which is again a very, very good stat. If anybody were to look at what widest Yorkers when the batsman moves outside the off stump to flick him on the leg side, I think that's one key point Yash Dayal has mastered. Bhuvaneshwar Kumar, we all think that okay, he's not a death bowler. Yes, he's gone for 12 runs, 11 runs, 13 runs because of the pace that he's got. But Sandeep Sharma is no different in terms of pace. He's probably slower than Bhuvaneshwar Kumar, but the kind of change-ups that these two bowlers have, I think is there's no comparison to any other bowlers, right? And Bhuvaneshwar Kumar's death bowling is only 9 economy, so which is great, right? But we will have to see how he fares in Chinnaswamy Stadium when he comes and does that time after time again. Remember he has to play 7 games there minimum, right? So Yeah. how he is going to do that, how he's going to play there will be the challenge that they all will be looking up to. Right. So, as rumor has it, Virat Kohli might be leading the side, sir. But do you think that if he doesn't, then whom do you think is going to be the perfect choice for in I won't be squad at surprised. least? So as far as I think it's not a surprise to me at all that they want to bring back the RCB management wants to bring back Virat as a captain. Well, he first thing is there's no deserving better deserving candidate when it comes to the IPL. Having someone like a Virat to lead the side, it was a shock to all of us when we saw a couple of years back that he wasn't going to lead and he wants to step down from the captaincy. But look, I think I'm sure the present team has put in a lot of trust and faith, and I'm sure they would have spoken if not already. They will. Um, uh, I want to see him as a captain back for the RCB because the kind of energy that he brings and he instills into his players, I think is phenomenal. So the kind of confidence that the players get out of him, that makes them go that one extra mile, for everybody in their performances. So I wish as a cricket fan, I wish I see him as a captain, and for the benefit of the youngsters, the players who are, whom they have in their side, I think they should make him the captain. If not, I see Phil Salt as the second best option there, in my opinion, as the possible captain role, keeping in mind the future, keeping the age factor again, and the kind of that leader that he is. Is a good guy who understands players, but it might just be a little too early for him to understand the kind of IPL set of players because he's just been a player with in the IPL for a couple of seasons, right? For him to know and understand each and every bowler, I think it might take a little bit time. Look at Faf has had played 15 years of IPL or just about that before he took up charge with RCB a couple of years back. So for me, it is not about just leading the side in the IPL. It is about knowing your players who will come and give you what you want at the right time, right? So that is key. If Phil Salt leads the side, obviously he'll have a lot of support from the senior pros. But he, as a captain, should be. I don't think RCB will be ready to just as yet test waters, in terms of the captaincy. To That's especially after such a good mega auction for them. A lot of mixed reviews on what RCB should have done, what or RCB did. That's all kind of
the frustration that the fans bring out for not having retained some of their best names or the best players that they have in their minds. Look, RCB fans carry their players in their heart, unlike most of the other franchises. Yes, we all know what Chennai does. CSK, if RCB has a fan following in entire Karnataka, CSK has globally and whichever stadium you go, it's all filled with yellow. So RCB loyalists feel that they have probably let go of their best players. But in my opinion, I think to rebuild that, they need a good captain to bring all that energy back for RCB. So all in all, a good squad. Definitely in the top four as of now. Looks like. I would say if they feel that they've got their bowling right, definitely I think they will be in the top four because they've got a very very strong solid batting lineup there. Right. Just to brush on their possible playing 11 potential 12 with an impact. Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal slash anybody who could replace there. But Rajat Patidar at number 4, Liam Livingston, Jitesh Sharma, Tim David, Kunal Pandya. Then you have your Bhuvaneshwar Kumar, Rashik Salamdar, and Yash Dayal. The last one being Josh Hazelwood slash um, either Lumi Ngidi or Tushara. Because a lot of people, in fact, mentioned to us as well that I think RCB used Patidar as an impact for somebody in the squad. I think for Swapnil Singh. So maybe they want to, sort of try something out, something like that also in It could be for anyone, if they feel that they don't want to use Devdutt Padikkal after he's finished his batting. It could be for him as well. It could be because again, Rajat was used as an impact, quite a few times. If they feel that somebody has to be on the field, some people just get complacent sitting back, and then they don't like to sit. They all want to be on the field. So it depends on that particular day what they feel, and that's a call I think the management will take on that given day. But yeah, Swapnil Singh, if required for him to be there, uh, I'm sure any of the Indian batters would probably give their way to for him to come and bowl those 4 overs. I'm excited to so see all in RCB this year. I feel very strongly that RCB has probably done their homework pretty well, and I will say they will be in the top 5 for me. Not on their scouting aspect, but from the fact that what these experienced bowlers can deliver, in my opinion, again in Chinnaswamy Stadium, and going outside what they can actually bring for the team. Those 7 matches outside of Bangalore is going to be key. So there you are. You've heard it from Sir himself. A lot of good news for RCB fans that it can be very happy finally, for all of you guys. That's pretty much it. As far as the RCB dissection, is concerned. And we'll see you, sir, in the next episode, dissecting another team and their auction performance and what their chances could be like in 2025. Sir, thank you so much for joining us once again, sir. Thank you very much. All right, so that was Mr. Sriram. A lot of RCB fans, as I mentioned, would be very happy. So क्योंकि actually ठीक ठाक ऑक्शन गया है और एक ठीक ठाक टीम बनाई है, ठीक ठाक नहीं है, अच्छी टीम बनाई है. ठीक है, let me rephrase it that way, and hopefully this should be the year for RCB, as it is always the case every year. So अभी हम सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कवर करना, जैसे मैंने बताया. बट क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग धोनी सैयद मुश्ताक अली में. यस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैच हुई थी पंजाब और मिजोरम के बीच में, जहाँ पे मिजोरम ऑलमोस्ट मैच जीत गया. पता है, ऑल मतलब मेरे को इतना बुरा लगा ना लास्ट ओवर में यार. कुछ 24-25 रन चाहिए थे और वो 3 बॉल में 20 रन चाहिए थे यार. हरप्रीत ब्रार ने कर दिए 19, एक वाइड डाला, 3 6 मार दिए उसने, और मिजोरम जीत गया था मैच यार. मैच पैक्ड था.
वो बेचारे हार गए यार, तो बहुत बुरा लगा। और इस बार पता नहीं, पंजाब 2 मैच हार चुकी है, 2 जीत चुकी है। सारे, अगर तू पंजाब की टीम के 11 लोग देखेगा ना, सब आईपीएल खेल चुके हैं, सारे सारे। और बेचारे मिजोरम में वही प्लेयर हैं जो मतलब अपने स्टेट के लिए जगह नहीं बना पाए। मतलब अपने स्टेट में इतनी कंपटीशन होती है कि जगह नहीं बना पाए, पर उन्होंने सारी क्रिकेट खेलनी है तो वहां जाते हैं। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, बिकॉज देयर आर प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ईशान किशन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, सारे मतलब सारे खेल रहे हैं इस बार। कोई ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट ले रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो इसलिए ये बहुत इंटेंस हो गया है यार। मतलब कुछ बड़ौदा के मैचेस देख लो, मुंबई के मैचेस देख लो, महाराष्ट्र के मैच देख लो, एमपी के देख लो, हैदराबाद में तिलक वर्मा खेल रहा है। तो आई थिंक नाउ दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज रियली नाइस टू सी एवरीवन कम टुगेदर। और बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि वो इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेल सकते हैं, जो उनकी गेम को और इम्प्रूव कर सकते और हैं। दूसरी बढ़िया है। बात ये है कि जनता भी आ रही है देखने भाई। हाँ जनता भी हाँ, देखने आ इंदौर रही है, भरा आपको हुआ देखना है। है, राजकोट में आ रही है, इंदौर में आ रही राजकोट आ है। रही है भाई। हैदराबाद में भी, हैदराबाद ठीक है उतना नहीं आ रहे, बट राजकोट और इंदौर में आ रहे हैं भाई लोग देखने। मेरे घर से 20-25 नहीं, 20 मिनट दूर है ग्राउंड हम्म राजकोट का। मस्त है। बट एक 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 बार मैं फिर भी लोगों को बताना चाहूंगा कि मतलब किस तरीके से मतलब अभी ग्रुप्स पैन आउट हुए हैं। आज हम ग्रुप ए के बारे में बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली। ग्रुप बी में बड़ौदा और सौराष्ट्र दे आर ऑन टॉप। तमिलनाडु थोड़ा नीचे है, 6th पोजीशन पे। 4th पोजीशन पे आपकी कर्नाटका है। उसके अलावा सिक्किम और त्रिपुरा वगैरह टीम्स हैं उसमें। ग्रुप सी में दिल्ली इज डूइंग रियली वेल, उत्तर प्रदेश भी ऊपर है। हरियाणा इज स्ट्रगलिंग अ बिट एट नंबर 4। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश दे आर येट टू ओपन देयर अकाउंट। ग्रुप डी में चंडीगढ़ और विदर्भा ऊपर हैं टॉप 2 पे। उसके अलावा आसाम, पुडुचेरी, रेलवेज, इनको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ओडिशा इज येट टू ओपन देयर अकाउंट विथ सिंगल विन। गोवा और नागालैंड भी ग्रुप ई में अभी तक कोई भी मैच नहीं जीते हैं। और ग्रुप ई में आंध्रा और केरला ऊपर हैं। केरला से ऑफ कोर्स याद आया जिस तरीके से अभी वो मैच जीते हैं। बट यू I will specifically focus on Group A today, and you spoke about Punjab and then the Mizoram game. बट कई सारी चीजें हुई हैं अभी, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है पंजाब में। यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो भी हुआ है, पिछले साल के विनर्स भी रहे हैं, उसके भी कई सारे रीजंस रहे हैं। एंड मिजोरम ऑफ कोर्स, यू वांट टू टॉक अबाउट दोस टू टीम्स? पंजाब से स्टार्ट करते हैं पहले। पंजाब लास्ट आई थिंक ट्रॉफी जीता था 95 में शायद, रणजी ट्रॉफी ऐसा कुछ जीता था। और उस टाइम पे पंजाब में ये था कि आपके पास ट्रॉफी नहीं आ रही है ज्यादा। तो उस टाइम पे फिर दे गॉट आविष्कर सालवी, ओमकार सालवी ब्रदर एंड ऑब्वियसली एन इंडियन क्रिकेटर। तो उसको लेके आए। और मनदीप सिंह जो अब नहीं खेलते पंजाब में, एंड ही इज मूव्ड ऑन एंड ही प्लेस फॉर आई थिंक मणिपुर, त्रिपुरा। हाँ त्रिपुरा त्रिपुरा। 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 एंड ही मूव्ड ऑन एंड आई थिंक उस टाइम में ना पंजाब में एक T20 रेवोल्यूशन आ गया था कि शेर पंजाब स्टार्ट हो गया है। तो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर वहां खेलते थे, वहां से वो अपनी टीम बनाना शुरू किया उन्होंने। फिर अपनी प्रैक्टिसेस में वो ये करते थे कि जैसे अगर मनदीप सिंह पहले एक सिचुएशन में आएगा कि भाई 3 विकेट गिर चुकी है पावर प्ले में, अब बैटिंग करने आए हो, तो नेट्स में वो मैच सिमुलेशन स्टार्ट हो जाता था। वो जैसे ही व्हाइट बॉल की नेट खत्म हुई, तो आप जाके सीधा रेड बॉल खेलोगे, बोलोगे अब तेरी टीम रेड बॉल में इस सिचुएशन में, तो अब तू कैसे खेलेगा। सिमिलरली बॉलर्स के साथ किया कि अभी आप डेथ में डाल रहे हो। आई थिंक दैट चेंज्ड अ लॉट फॉर पंजाब। एंड आई थिंक पंजाब ऑल्सो वांटेड टू डू इट फॉर पीपल लाइक युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जो इतनी सारी चीजें मतलब they've left a legacy for Punjab. So they really wanted to do it. So last year we could see most of them get an IPL contract, as I said. So it was very nice to see because वो लोग I think बड़ौदा के सामने फाइनल जीते थे, और एक बार सेमीफाइनल बड़ौदा के सामने हारे भी थे। And in the last 5 years, in fact, Punjab and Baroda are two teams that have consistently, if not every year, reached at least the semi-finals to show that they dominate with the white ball. इस बार पता नहीं क्या हुआ है. I think their bowling is has been a little bit of a letdown, despite Arshpreet Singh, spinner Brar being there.
Baltej Singh being there. They're all senior players now. In age, they're 24, 25, but they're all senior pros. But इस बार पता नहीं bowling नहीं कर पा रहे पंजाब for some reason, and maybe राजकोट में मैच हुआ था. राजकोट has the ability to give you flat. There are cracks on it, but they are mostly flat. So I think that could be one reason. But हाँ, पंजाब काफी नीचे है यार. मतलब it's not in the top 4 also, it's 5. और अगर वो मिजोरम के सामने हार जाते हैं, तो बॉस दैट वुड हैव बीन अ विक्ट्री फॉर मिजोरम. मतलब भाई मजा आ जाता मिजोरम के सामने अगर जीतते. Coming to Mizoram cricket, Mizoram cricket has gone through one of the toughest times of all times. ठीक है. I think they 1992 में उन्होंने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की. मतलब किसी ने हिम्मत दिखाई कि भाई हम क्रिकेट खेलते हैं, और वो भी क्रिकेट उन्होंने खेला जो एक्सपेट्रिएट थे कि भाई आप हम यहाँ मिजोरम में काम कर रहे हैं तो हम क्रिकेट खेलते हैं. 1992 से लेके 2018 तक, ठीक है, जैसे एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, एफिलिएट मेंबर्स होते हैं और फुल मेंबर्स होते हैं, वैसे ही बीसीसीआई के फुल मेंबर्स होते हैं और एसोसिएट एंड एफिलिएट मेंबर्स होते हैं. अब होता ये है कि अगर आपको एसोसिएट टाइटल भी चाहिए ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एज ग्रुप स्ट्रक्चर होना चाहिए, 15, 16, अंडर 19 का. जब वो अंडर 19 की टीम कंसिस्टेंटली प्लेट ग्रुप में जीत के एलीट ग्रुप में जाती है, तब आपको एसोसिएट स्टेटस मिलता है. और फिर आप जब एसोसिएट स्टेटस लेते हो और कॉन्स्टेंटली अच्छा करते हो, तो 2, 3, 4 साल बाद आपको फुल मेंबर स्टेटस मिलता है. मतलब जब तक आप एसोसिएट नहीं हो, आपकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसको पैसे नहीं मिलते हैं. फिर आप जब एसोसिएट बनते हो तो कुछ 50 लाख मिलते थे. फिर जब आप फुल मेंबर बनोगे, तब जाके आपको उतने पैसे मिलेंगे कि आप अपना एक बोर्ड कर सको. और यार मिजोरम जैसी जगह पे जहाँ पे it is not accessible to play a lot of cricket. They don't have a lot of cricket grounds. The weather doesn't permit to have that. और उस सिचुएशन में 15 लोग इकट्ठा करके क्रिकेट खेलना और इतना अच्छा खेलना कि आप आके अब पंजाब जैसी टीम्स को डोमिनेट करते हो. आई रिमेम्बर मोहम्मद कैफ छत्तीसगढ़ के लिए खेलने चले गए थे एक टाइम पे. अग्नि चोपड़ा, सन ऑफ विदुनो चोपड़ा, नाउ प्लेस फॉर मिजोरम. सो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, विच इज गुड फॉर मिजोरम क्रिकेट ऑल्सो, बिकॉज कुछ आपको चाहिए होता है जो बाहर से आए और आपको एक्सपीरियंस दे. सो मिजोरम क्रिकेट की ना बहुत तरुवर कोहली भी एक बार आई थिंक मिजोरम के लिए, हाँ आई थिंक मिजोरम के लिए खेले थे. तरुवर तरुवर कोहली also played. So all of these players come together. They sort of try to get whatever they can to this cricket association, because funds नहीं है दोस्तों के पास. They don't have funds that उनके players अलग अलग होटल में रहे हैं या फिर अलग अलग, and traveling is also a big deal for them because the airport is also quite far. अब यहाँ पे आके पंजाब को ऑलमोस्ट हरा देना was a remarkable achievement. मतलब मजा आ गया देख के मेरे को. एंड मोहित जांगरा करके उनका प्लेयर है भाई साहब, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब मैं करता हूँ. क्या बैटिंग की है उसने पंजाब के सामने, देखने लायक था वो मैच. आई थिंक है ऑन वन ऑफ द एप्लीकेशंस. एंड केसी करियप्पा, another example of someone moving from their home state to Mizoram, and in fact he was a Karnataka player. एंड कर्नाटका में आपको अगर आपकी जगह चली जाती है ना, तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे एलीट प्लेयर्स. So I think a few things like this is giving these states who became very recently 16 में 18 में full members. I think उनको पंजाब के सामने ऐसी परफॉर्मेंस देना was very remarkable. तो ये है ग्रुप ए का एक इंटरेस्टिंग, क्या बोलते हैं, juxtaposition. पंजाब being champions. डायनेमिक्स. बट और भी दो टीम्स हैं जो खेल रही हैं, विच इज अभी मतलब उसके अलावा भी 6 टीम्स हैं जो खेल रही हैं इसी ग्रुप में, बट थोड़ी नीचे लगी हुई है. एक टीम है जिसने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, वो है मेघालय. और एक टीम है जो एक मैच जीती है सिर्फ, वो है बिहार. आई थिंक बिहार हैज वन अगेंस्ट मेघालय ओनली, एक जो गेम जीती है. बट दिस बिहार में भी मतलब दिस इज क्वाइट लॉट दैट्स हैपनिंग. मतलब उनको अभी समझ में आया है कि मतलब उनकी एक्चुअल टीम कौन सी है. जिस तरीके से मतलब काफी सारी इतने पॉलिटिकल सिनेरियोज वगैरह चल रहे थे. लास्ट ईयर सो हुआ था ना वो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट यही साल हुआ था. है? यही साल हुआ था ना वो, 2 टीम खेलने आ गई थी. हाँ.
बट इनका कैसे रहा है अभी तक परफॉर्मेंस? यार मैंने ना मेघालय का मैच देखा, ठीक है। अम, यार थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इट्स they need help. I mean, they need a lot of help in terms of match practice, in terms of playing against players like Rahul Chehra. राजस्थान के सामने जो उनका मैच था, it, it was a tough match. तेरे को पता है, बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसको बोल सकूं ना, तो तेरे को पता है 2003 वर्ल्ड कप में यूएसए खेलने आई थी, कनाडा खेलने आई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच था यूएसए के सामने जहाँ पे 46 से ऐसे कुछ ऑल आउट हो गई थी यूएसए एंड ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो वो ना थोड़ा पता चल जाता है, पता है कि ये नहीं, मतलब नहीं जम रहा है, ये हो क्या रहा है। जैसे राहुल चहर का गूगली था, वो इतना जोर से अंदर आया, वो उसका पैर ही नहीं हिला यार, मतलब he couldn't understand what's happening, and it will take time. In fact, Tanmay Mishra also पर plays for सारी नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आप देखो उठा के, से फॉर एग्जांपल उस दिन त्रिपुरा का भी मैच चल रहा था, जो काफी मतलब मिसमैच ही लगता है, क्योंकि वहां पे अभी तक वो फैसिलिटीज है ही नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम भी है भाई। यार पता है, वो तू स्किल की बात कर रहा है, लेकिन जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो लोग आपस में इतना खेले ही नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन बन हम्म। पाए कि भाई रन लेना है नहीं लेना है। मतलब ऐसा हुआ है कि उसने टैप किया कवर्स के लिए, दोनों बैट्समैन भागे, नॉन स्ट्राइकर भागा, बीच में आके उसने बोले नहीं, वो कहाँ जाऊं मैं। फिर कल बैटिंग कर रही थी मेघालय की टीम, तो 8 विकेट गिर गई थी, और आकाश चौधरी है उनका बैट्समैन, अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो उसने उसको बोला भाई तू खड़ा रहे विकेट। उसने मारने की कोशिश की, तू स्टंप के सुन सकता है, आगे खेलना, आगे आगे खेल। तो ऐसा थोड़ा हो जाता है उनका कि यार ये वो बट whenever they take a wicket etc, they get, like, you could see that there is a certain joy that they are there among all of these players. Like someone from Meghalaya, if he gets a chance to bowl to someone like Hardik Pandya and probably get his wicket, and that's हम्म। like नेहल वधेरा को बोल्ड किया था, या रमनदीप को, नेहल वधेरा को। और वो बोल रहा है हम्म। ऐसे, कुछ तो उसने उल्टा ऐसे करके डाला, ऐसा सीधा, वो बोल्ड हुआ, बोल रहा है ऐसे बॉलिंग नहीं कर सकते आप लोग, कैसे पर आउट कर दिया उसने यार। So we might see a lot of different techniques of cricket also come up, because उनकी conditions कैसी है नॉर्थ ईस्ट में, we're not very sure of. So they will try to adapt according to that and see, oh this works, this does not work. हम्म। तो बीसीसीआई को ना थोड़ा उनको, उनकी अंडर 19 टीम, 16 टीम, उनकी सीनियर टीम्स को थोड़ा मौका देना चाहिए अगेंस्ट राजस्थान बी टीम और हम्म। बॉम्बे बी टीम और समथिंग लाइक दैट, सो दैट दे प्ले मोर क्रिकेट। ये है। बाकी और 4 टीम्स हैं उसमें, के बारे में मैं थोड़ा सा लोगों को बता देता हूँ। सो आई स्टार्ट ऑफ विथ द टेबल टॉपर्स, जो भी है राजस्थान। एंड राजस्थान में भी मतलब नॉट एवरीथिंग इज, हाँ, सॉरी, राजस्थान क्या? राजस्थान में मैं कह रहा हूँ कि मतलब नॉट एवरीथिंग इज हंकी डोरी, क्योंकि वहां पे अभी भी कैप्टनसी चेंज हुई है, अगर लोगों ने नोटिस किया हो तो। वाइल दीपक हुडा वाज द कैप्टन ड्यूरिंग द रणजी सीजन, अभी महिपाल लोमरोर है वहां पे कैप्टन। और महिपाल लोमरोर ने एक्चुअली इसको कैप्टन किया था समवेयर अराउंड 2018 2019 के आसपास, ठीक है। और दीपक चहर अभी भी वाइस कैप्टन था, पर दोनों को हटा दिया। तो एक मैच हुआ था, मतलब मैच होने वाला था ग्रुप बी का, एक्चुअली रणजी का, ठीक है। और ये लोग खेलने वाले थे हैदराबाद के अगेंस्ट, और ये खेलने वाले थे जयपुर में, सवाई मानसिंह में। तो पूरी टीम आती है प्रैक्टिस करने के लिए, पर दीपक हुडा जो है पार्टिसिपेट नहीं करता प्रैक्टिस में, वो पूरा टाइम फोन पे लगा रहता है एक पैनल के साथ। अब इस पैनल में तू मानेगा नहीं, ठीक है, न्यूज आई है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, वो तक इन्वॉल्व हो गया था कि भाई एक बंदा है, विकेट कीपर है कुणाल सिंह राठौर करके, ठीक है, उसको खिलाना था। दीपक हुडा ने, उसने कहा कि भाई मेरे को ये खिलाना ही खिलाना है, ये टीम में होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पैनल कह रही है कि नहीं भाई। अब पैनल में कौन कौन है, ठीक है, एक आपके एमएलए हैं जयदीप बिहानी, ठीक है, वो बीजेपी से हैं। एक है रतन सिंह, पवन गोयल, और धर्मवीर सिंह शेखावत, ये सारे लोग हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई इसने कुछ किया ही नहीं है कुणाल सिंह राठौर ने, और अभी सिर्फ पिछले 3 इनिंग्स में जो है उसने, सॉरी 3 मैचेस में सिर्फ एक ही 50 मारी है, वो भी पुडुचेरी के अगेंस्ट में।
तो उसने कहा कि यार ये बन नहीं पा रही बात, आप जो है, और पर वो इतना ज्यादा लड़ लिया, इतना ज्यादा लड़ लिया दीपक हुडा और इसके साथ दीपक चहर और जो कुछ कोर ग्रुप था प्लेयर्स का, वो उसका सपोर्ट करने लग गए थे। बट अभी भी ठीक है, अगर आप देखो तो एक्चुअली इस टाइम पे कुणाल सिंह राठौर टीम में नहीं है, ठीक है। अभी उनका जो कीपर है वो है भरत शर्मा। पर इन सब चीजों के बावजूद, ठीक है, ये लोग चार चार में से चार जीत चुके हैं। लास्ट टाइम भी अगर देखा जाए तो मतलब दीपक हुडा वाज वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स फॉर राजस्थान, इसमें सैयद मुश्ताक अली में। बट उनके ना दो प्लेयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक है जुबैर अली खान करके और दूसरा है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा थोड़ा 18 साल का लड़का है, ठीक है। अभी अंडर अंडर 19 में कूच बिहारी में कूच बिहार ट्रॉफी में उसने लीड भी किया था राजस्थान की टीम को। और जुबैर अली खान एक्चुअली उसके फादर जो है रणजी खेलते थे। पर इस लड़के ने क्या किया कि मतलब क्योंकि उसके फादर को उतनी कमाई नहीं मिल रही थी ड्यूरिंग हिज टाइम, तो उसने क्या किया कि भाई 2016 से थोड़ा लेट शुरू किया, बिकॉज ही वांटेड टू डू हिज बीटेक आल्सो साइड बाय साइड। उसके चाचा जी इंडिया ए तक खेले हुए हैं। और ये लड़का राजस्थान प्रीमियर लीग से निकल के फिर अंडर 23 भी खेला है इसके लिए। और छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट इसने 200 मारे थे। और अभी जो है ये जब ये सैयद मुश्ताक अली खेल रहा है, कह रहा है कि भाई मैं वाइट बॉल ज्यादा एंजॉय करता हूँ रादर देन रेड बॉल। तो उसको उस चीज में मजा भी आता है। बट वन गाय हुज बीन एक्चुअली प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ फॉर राजस्थान, एंड ही प्लेड फॉर टीम्स लाइक आरसीबी ऑल्सो इन द आईपीएल, इज अनिकेत चौधरी। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है उनका, शुरुआत में आता है, बॉलिंग करता है, ठीक है। और ही was in fact I think he became the first player ठीक है to represent his side in the final of रणजी ट्रॉफी, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एंड विजय हजार, ठीक है। तो वो इकलौता ऐसा बंदा है जो मतलब 2011-12 से खेले जा रहा है। सो ये जो इनके बंदे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अभिषेक तोमर है, एक भरत शर्मा जिसकी मैंने अभी बात करी, इन लोगों ने एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा किया है फॉर फॉर राजस्थान। सो समथिंग दैट पीपल कैन लुक आउट फॉर, समथिंग दैट पीपल डेफिनेटली, आई थिंक राजस्थान इज लुकिंग लाइक अ वेरी कॉम्पैक्ट टीम राइट नाउ। चाहे जितना भी बाहर का पॉलिटिक्स हो ना, अंदर की टीम एक्चुअली काफी यूनाइटेड लग रही है उनकी। एक है मध्य प्रदेश, अभी अभी पर ये लोग राजस्थान की एक बात पता है तेरे को? राजस्थान की एक बात पता है? हाँ, रवि बिश्नोई भी राजस्थान से, he's played राजस्थान थ्रू आउट, he's moved now यस, to गुजरात बिकॉज उसको बोला कि आप सिर्फ व्हाइट बॉल खेलोगे, बोलता है नहीं मैं सब खेलूंगा, मैं रेड बॉल भी खेलूंगा। यही तो बोल के मनदीप सिंह भी गया वहां पे हाँ, ठीक है, त्रिपुरा। बट दीपक यार हुडा वही तुमको मैं वही छोड़ा मैं कह पता रहा है? हूँ ना, इवन इफ यू मूव वन गाय, ठीक है, एंड ही वाज द कैटलिस्ट उस टाइम पे, बिकॉज अगर आप देखो, जो जब तूने पंजाब की बात करी और आविष्कार सालवी की बात करी, दोनों का कॉम्बो था, मतलब तरीके से गया। अभी फिर उसके बाद मनदीप सिंह को बोला कि नहीं भाई, आप नहीं खेलोगे, उसमें नहीं हो आप, हमारे रेड बॉल सेटअप में नहीं हो। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मेरे को सब खेलना है, मेरे को सारे फॉर्मेट खेलने हैं, मेरे को इंडिया भी खेलना है। और बंदा खेला है इंडिया के लिए, तेरे को पता है 2016 के आसपास उसने इंडिया खेला है, मनदीप सिंह ने। वही नाम नहीं आता ना He's उसका, बहुत played one नाम or था two, उसमें। हाँ। और वो आईपीएल से ही बड़ा हुआ। ही प्लेड फॉर हम्म। व्हाट, किंग्स इलेवन आई थिंक। उस टाइम पे किंग्स इलेवन पंजाब होती थी। बट इसे ऐसे खेल के ही वो इंडिया गया। बट ऐसे ऐसे ही निकलते हैं यार, मतलब स्टार्स तो ऑब्वियसली ऐसे ही निकलते हैं। एंड इट वाज एक्चुअली ग्रेट कि मतलब यार सैयद मुश्ताक अली उसने जिता के दिया बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मतलब। बट बिहाइंड द सीन्स भी मतलब यार बहुत सारी चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब, बिकॉज द एसोसिएशन हैज आल्सो हेल्प्ड यू अ लॉट। उसके अलावा एक और टीम है मध्य प्रदेश की, हमारे चंदू सर की टीम, जो कि अभी अभी रिसेंटली बंगाल के अगेंस्ट एक लास्ट बॉल, आई थिंक लास्ट बॉल के अंदर ही जीती है। बट इट्स बीन डूइंग प्रीटी वेल। अभी भी वो सारे चारों मैच जीते हैं, आई थिंक बंगाल के अगेंस्ट था, पंजाब के अगेंस्ट था, और मेघालय और मिजोरम है ना, बाकी जो दो टीम बची हुई हैं नीचे, उनके उनके अगेंस्ट था। सो उनके कुछ प्लेयर्स जो दो हैं, एक है हरप्रीत सिंह और एक है सुब्रांशु सेनापति। अगेन द मूव दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, बोथ ऑफ देम हैव मूव्ड दिस ईयर टू मध्य प्रदेश, या बोथ ऑफ देम।
एंड ये अपना सेनापति जो है आया है उड़ीसा से, और ये हरप्रीत सिंह आया है छत्तीसगढ़ से। और दोनों इसी साल आए हैं क्योंकि इनको अपने करियर पे फोकस करना है। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश बीइंग ये चंदू सर के अगेंस्ट ये लोग इनिंग्स अच्छी खेल के, फिर उसके बाद चंदू सर ने कॉल किया कि भाई यहाँ पे आ जाओ, तो इन लोगों ने बुला लिया। फिर उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके चंदू सर अलग अपनी स्काउटिंग कर रहे हैं, अपना अलग कोच कर रहे हैं वो। So Harpreet Singh is actually from Chhattisgarh, या but because छत्तीसगढ़ इज नॉट वाज, उसका भी बड़ा कहानी है वो ग्रुप सी में बताऊंगा, बट हाँ, बिकॉज छत्तीसगढ़ वाज नॉट a proper cricketing this thing, that is like the facilities were less and they weren't progressing, so he went there. There's बहुत players जो सेम छत्तीसगढ़ इज द केस विद से ओडिशा। भी है, ये बिकॉज ये एमपी से ये कट के ये गया वाले ना, बंदे। हाँ। एमपी से कट के ही बनाया ना छत्तीसगढ़ 2000 के साल में, हम्म। तो इसलिए वो वही मिलर प्लेयर सेम इज द केस विद ओडिशा। शुभ्रांशु सेनापति का भी वही सेम केस है। है। बट वो कुछ आई थिंक 8 साल खेलने के बाद भाई वहां से निकला है। आई थिंक कुछ 50-55 मैच खेले थे उसने, और कुछ 3,000 रन है उसके एक्चुअली देखा जाए फर्स्ट क्लास में। और उसको लिया भी चंदू सर ने तभी था जब उसने पिछले सीजन में कुछ 300 के आसपास, 300 के आसपास तो नहीं, मतलब 250 के ऊपर रन बनाए थे एक ही इनिंग्स में। तब चंदू सर ने कहा कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे खेलो हमारे साथ, तब उसको एनओसी वगैरह मिला। बट लास्ट ईयर ये लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे एक्चुअली स्मैट के उसमें नॉकआउट्स में। बट एक प्लेयर है जो मुझे थोड़ा पसंद आया है, वो है शिवम शुक्ला। हाँ, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्पिन है उसका, अगर तुमने देखा होगा ना महाराष्ट्र प्रीमियर, सॉरी मध्य अपना एमपी प्रीमियर लीग में भी इसमें थोड़ा सा ना स्किड करता है ऐसे ऐसे करके। अजीब सा ऑप्शन है, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। थोड़ा सा मतलब, लेकिन स्किड अच्छा करता है। और ऑफ स्पिन है, अंदर जाती है एकदम से, घुसती हुई एकदम जुप करके। उसने अभी 4 विकेट भी निकाले हैं आई थिंक किसी एक मैच में। तो उसको उसको प्लीज फॉलो करना। बाकी तो सारे नाम यार आप लोगों को पता ही है, आवेश खान हो गया, वेंकटेश अय्यर हो गया, रजत पाटीदार हो गया, आपको सारे नाम पता ही हैं, ये लोग सारे खेलते ही हैं। बट स्टिल समवेयर आई थिंक ये नाम कुछ हाईलाइट होने ही चाहिए। बाकी अपना शम्मी जी बंगाल के लिए खेल रहे हैं, पर थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं है। मजा एक नहीं आ विकेट रहा एक है। मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाली थी अभी। एक मैच में अभी 3 विकेट निकाली है आई थिंक अगेंस्ट हैदराबाद। 3 मैच, मतलब 3 विकेट निकाली, बट अदरवाइज ही इज कंसीडर्ड अबव 38-40 रन 39 रन पर एमपी के मैच में इनिंग्स। भी था। ऐसे ही है, तो वो थोड़ा सा है। बट एक 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 मैच हारे हैं अभी तक, 3 मैच जीत चुके हैं। और इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो वो जो इनका प्रिलिमिनरी क्वार्टर फाइनल नहीं होता, वहां पे वहां तक पहुंचे थे, पर आसाम के अगेंस्ट हार गए थे ये लोग। हम्म, और लेकिन अपनी टेबल में आई थिंक दे फिनिश समवेयर अराउंड व्हाट, नहीं अभी इस टाइम पे वो अभी क्या थर्ड पे हैं। थर्ड में। और अपनी टेबल पे आई थिंक उस टाइम पे लीग स्टेज पे अराउंड दूसरे पे थे। एक लड़का है जिसने मेरे को थोड़ा सा इम्प्रेस किया है, वो है करण लाल। उसको देखना। उसने मतलब थोड़ा वैसा कैरेक्टर है वो, मतलब इन योर फेस वाला कैरेक्टर है। फाइस्टी सा है, अगेन एन ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर। उसने ओपनिंग करी थी अगेंस्ट हैदराबाद ही। उसने बहुत अच्छा खेला था। आई थिंक कुछ 40 ऑड रन मारे थे उसने। तो वो देखने लायक है बंदा एक। और एक है जो बंगाल का कैप्टन है, ठीक है, उसका नाम है सुदीप कुमार घरामी। ठीक है, उसकी बड़ी अजीब सी स्टोरी, मतलब अलग अच्छी स्टोरी ये है कि मतलब अंडर 23 खेला था ना जब तक उसने। वो एक्चुअली उसके हम्म, घर, उसके फादर मेसन थे, मदर वॉज अ हाउस वाइफ। ठीक है, और वो घरों में वैसे वाले वो जो मड वाले घर नहीं होते उनमें रहता था वो। हम्म, अंडर 23 खेला, जितना भी पैसा उसने कमाया था ना वो सारा का सारा अपने माँ बाप को दिया। ठीक है, एंड आई थिंक अराउंड 2021 वाला सीजन था व्हेन ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन हिज हाउस स्टार्टेड बिल्डिंग, मतलब ऑन डे वन ऑफ द फाइनल दैट बंगाल वाज प्लेइंग। आई थिंक उस वो फाइनल खेला था डायरेक्टली। और फिर उसके बाद उसका घर बनना शुरू हुआ था, सुदीप कुमार घरामी। बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। नंबर 4 या नंबर 5 पे खेल रहा है हम्म, आजकल सैयद मुश्ताक अली में, इसके लिए बंगाल के लिए कैप्टन कर रहा है। So please हम्म, go and watch out for him. And the last team that I want to talk about is Hyderabad, तिलक वर्मा की। पिछले साल ये लोग 7 में से 6 मैचेस जीत चुके थे। एंड स्टिल इनका ये, क्योंकि ये मुंबई और बड़ौदा के साथ थे, ठीक है, ये फिर स्टिल दे एंडेड अप एट नंबर 3 इन द टेबल।
ठीक है, क्योंकि मुंबई और बड़ौदा भी सेम नंबर ऑफ मैचेस जीती थी। एंड इस साल दे हैव प्लेड टू, लॉस्ट टू। तिलक वर्मा हर मैच में मार रहा है भाई, वो हर मैच में मार रहा है, सिर्फ एक ही मैच में नहीं चला, बट अदरवाइज हर मैच में मार रहा है। बट तिलक वर्मा के बारे में हम सब जानते ही हैं, सरानो निशांत के बारे में हमने बताया ही है ऑब्वियसली। बट दो बंदे हैं, एक है राहुल बुद्धि करके, ठीक है भाई, वो पॉकेट डायनेमो है पूरा का पूरा, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंडर है, 27 साल का, और वो मुंबई इंडियंस के लिए भी एक्चुअली खेल चुका है, ठीक है। उसने हर मैच में 29 से 30 रन मारे हैं हैदराबाद के लिए कंसिस्टेंटली। उसको जाके देखना, ही इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन। नंबर 3 या नंबर 4 पे खेल रहा है आजकल, आई थिंक आफ्टर तिलक वर्मा, सो नंबर 4 पे खेल रहा है। और एक लड़का है रवि तेजा, ठीक है, वो फास्ट बॉलर है। he starts off the attack for ये हैदराबाद। तो उसने एक मैच में एक्चुअली 4 विकेट लिए हैं। एंड रवि तेजा के बारे में आई थिंक हम पहले भी बात कर चुके हैं, या पता बात नहीं, कर मुझे चुके याद हैं। नहीं आ रहा He was highly cricketer at one point in time, यार। One point in है। time, last year ही शायद। Last year ही सो उसके उसकी जर्नी इनफैक्ट देखने लायक है यार, मतलब वो बंदा काफी अच्छे बॉलिंग भी कर रहा है अभी। आई थिंक ही इज बॉलिंग समवेयर अराउंड 136 137 ही इज क्लॉकिंग। सो Ravi Teja is one guy that everyone can actually look out for. So these were the top 4 teams in Group A. बाकी ऑफ कोर्स काफी काफी सारा और भी एक्शन है। ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ग्रुप ई है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर 4 ग्रुप्स एज वेल, बट we'll do it in phases, and I think it is important that each team gets its own time on the Uncapped Indians podcast, because that is what it is, like अगर अगर हमने नहीं किया तो कौन करेगा भाई? कोई कोई भी नहीं कर रहा ना? कोई कर रहा है क्या स्मार्ट कवर? कोई देख रहा है क्या? पता नहीं, मैं मैच देख रहा हूँ और मैं उस पर बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंप्लीट पैशन। तो और कंपटीशन एनालिसिस कौन करेगा हमारा? कंपटीशन अंकित। एनालिसिस मैं करूंगा यार। हम ही खुद का कंपटीशन है। हम कितने खराब। हम ये करते हैं कि अगर हम आज हमें अपने आप से हमेशा बेहतर बनने की ट्राई करते हैं कि आज जो उससे बेहतर बने, तो हम बहुत खराब करते हैं ताकि अगले दिन बेहतर बन जाए, फिर वापस खराब कर देते हैं ताकि बेहतर बन जाए। पर तेरे को पता है इस बार जैसे मैंने बोला था ना, रणजी ट्रॉफी में लेफ्ट आर्म स्पिनर रेड बॉल वाले ज्यादा विकेट लेते हैं। पिछले 5 साल में इट इज द फास्ट बॉलर्स हु फीचर इन द टॉप दिस थिंग। आउट ऑफ 50% ऑफ देम आर फास्ट बॉलर्स इन सैयद मुश्ताक अली ऑन ऑलमोस्ट बुलिश ट्रैक्स। इतना मतलब आई थिंक ऑन एन एवरेज हर गेम में 175 180 बन रहा है। आराम से 200 200 250 220 20 भी बना रहे हैं। मतलब हम्म। आईपीएल का फुल तैयारी चालू हो गया है इनका। अभी देखना विजय हजारे में फिर कैसे, मतलब मेरे को लग रहा है विजय हजारे तक थोड़ा सा विजय हजारे ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वरना इंग्लैंड जैसी हालत हो जाएगी। भाई हम तो खेलते ही नहीं 50 ओवर तो। अभी भी मैच चल रहा है एज वी रिकॉर्ड, इंडिया वर्सेस फिर वो क्या लगता है कि पाकिस्तान। मतलब जाना चाहिए इन लोगों को, मतलब जैसे ही ये यहाँ से खत्म होता है सीन ऑस्ट्रेलिया से, फिर उसके बाद इन लोगों को थोड़ा सा जाके विजय हजारे खेलना चाहिए, क्योंकि इन फेब्रवरी में मतलब अपना स्पेसिफाई चैंपियंस करो, ट्रॉफी है भाई। इन लोग मतलब स्पेसिफाई करो। इन लोग इन लोग मतलब जो अभी मतलब खेल वो, रहे हैं और जो चैंपियंस लीग चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। हाँ जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले हैं जाना चाहिए। और मेरे को पता है एक्चुअली, अगर एक ना छोटा वर्ल्ड कप रखना चाहिए कि आपकी जो डोमेस्टिक टीम जीती है ना आपका 50 ओवर फॉर्मेट, जैसे वेस्ट इंडीज का सुपर 50 करके है, हम्म। श्रीलंका का एक ऐसा ही कुछ नाम है, कुछ क्रिकेट कुछ तो उसका भी नाम है जिसकी वजह से ये 4 फास्ट बॉलर बने हैं। साउथ अफ्रीका में एक सुपर 50 है, लोगन कप है जिम्बाब्वे में। इन सबको आना चाहिए और एक वर्ल्ड कप खेलना चाहिए कि भाई डोमेस्टिक या तो प्लेयर्स ऐसा नहीं भी कर है। सकते हैं ना, जैसे तू अभी वर्ल्ड कप कह रहा है, इससे बढ़िया तो ये भी कर सकते हैं कि अब जैसे तू ये कह रहा है ना, वेस्ट जोन साउथ जोन वैसे भी खिला सकते हैं, या तो विजय हजारे में, या तो ये हम्म। भी कर सकते हैं कि वो तो आप चैलेंजर ट्रॉफी में फिर कर लेते हैं वो कवर। चैलेंजर ट्रॉफी वगैरह या में तो फिर कवर कर ईरानी की लेते हैं। तरह खिला लो, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस द इंडिया दैट इज गोइंग टू प्ले इन द चैंपियंस ट्रॉफी। वो एक ट्रॉफी कराओ, बाकी सबको लेके आओ सब, ताकि सब लोग 50 ओवर खेले, सबको खेलना पड़ेगा 50 ओवर। सब डोमेस्टिक टीम्स को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सीधा वर्ल्ड कप नहीं मिलेगा खेलने को। अगर वर्ल्ड कप में आना है तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आओ। सिर्फ वर्ल्ड कप ही चलेगा 50 ओवर, देखना है एक टाइम पे ऐसा आएगा सिर्फ वर्ल्ड कप आएगा 50 ओवर। बाकी कोई बायलैटरल सब बंद, सिर्फ टेस्ट मैच, T20 और T10। So that's pretty much it, guys. For today's episode. बाकी हम करते रहेंगे आगे डिस्कस, जैसा हमने कहा।
वो सीरीज भी लेके आते रहेंगे, आईपीएल वाली, ये वाली भी करते रहेंगे, और इंटरनेशनल क्रिकेट पता नहीं कब करेंगे। अभी हम कुछ गारंटी नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, ये जरूर करेंगे, हम सैयद मुश्ताक अली जरूर करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रुप बी, ग्रुप सी, फिर ग्रुप डी, फिर ग्रुप ई, एक एक करके फेज वाइज करके आपको बताएंगे, ताकि आपके भी ध्यान में रहे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज, यू गाइज नो वेयर वी आर, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, स्पॉटिफाई, amazon, और पता नहीं कहाँ कहाँ। So please go ahead and give us your love. Thank you so much, guys.